Hello students, how are you all? I am hoping that you all are safe and fine. Today again you are here with me Deepika, your science teacher. Today we are going to do our recapitulation of the chapter in the form of the bookwork. As the reading part of this chapter is over, so today we are going to do the bookwork of this chapter. So yes, bookwork, after doing this bookwork, actually I am not going to start with our new chapter. So yes, for 7th, I am giving you first 3 chapters as the PT1 syllabus. Chapter 1, nutrition plants, nutrition animals, and then fibers to fabric. So yes, these 3 chapters will come in your PT1 exam. And exam will conduct in the form of the short questions like MCQs, filling the blanks, one-word answers. So yes, one word answer will be there. So it will be a 20 marks test and very short test it will be. So yes, first 3 chapters will come in your exam. So we are going to revise 3 chapters instead of doing our next chapter, so that your chapter will revise also and you will prepare also with the PT1 syllabus. I had taken feedbacks and I got to know that many of the students are still didn't start learning part. Many of the students are doing their learning part, but still many of the students are there who are not doing their learning part. So beta, it's a high time to learn your chapters. So yes, those students who didn't learn the chapter, started by today only, because your PT1 is about to come. Okay, so yes, one more thing, I am saying Happy Mother's Day, belated Happy Mother's Day. Yesterday was Mother's Day and I am hoping so you enjoyed a lot on this day. So yes, today now we are going to start with our bookwork. Okay, our first bookwork is present on page number 62. Yes, first question is, lemon juice is dash in taste. Yes, which is that, what is the taste of the lemon juice? It's sour, bitter, salty or sweet. Its answer is A, sour. Now second question is, which of the following is a mineral acid? Yes, mineral acid means inorganic acid, those acids which we are preparing in the lab. So yes, citric acid, oxalic acid, glycolic acid or sulfuric acid. Its answer is D, and as I told you, sulfuric acid is the king of the chemicals. So yes, it is the strongest acid known on the earth right now. Next one is, fruits such as oranges, lemons, etc. contain dash acids: citric acid, lactic acid, ascorbic acid, acetic acid. Yes, all the sour taste substances mostly containing the citric acid in them. So answer is A. Fourth question is, which one of the following is not a neutral substance? Neutral substance means not acidic, not basic. So which one is not a neutral substance? Glucose, sodium hydroxide, urea, sugar. Its answer is B, sodium hydroxide. Why? Because it is a base. Next question is, bases are generally dash to touch. Yes, it's soapy to touch. So answer is C, soapy to touch. So our next bookwork is present on page number 66. So yes, first bookwork is, bases turn red litmus to blue. Answer is C, blue. Next question is, if the given solution neither changes the color of red litmus nor blue litmus paper, it is, yes, neutral solution, because it is not changing any of the color, not acidic color, not changes to color to red or not changes to color to blue. Next one is, hydrochloric acid solution affects dash litmus paper. Hydrochloric acid is what? It is an acid. So it will turns blue litmus paper to red. Answer is B. Next one is, bases turn the yellow turmeric paper to, yes, red. These answer I think so कि you learned already. आपको ये सारे के सारे आंसर्स याद ही हो गए होंगे, आपको देखने की भी ऑप्शन जरूरत नहीं होगी. Next is, methyl orange is a dash indicator. Natural, human made, pink, colorless. So it's a human made indicator. Answer is B. Now our next MCQs are present on
page number 71. 71. So yes, first MCQ is worksheet MCQs. So yes, first MCQ is the substance which turns blue litmus red is basic, acidic, neutral, all of these. So yes, it's acidic. Acidic turns blue litmus to red. Next question is, which of the following is a property of an acid? Yes, sour taste, sweet taste, bitter taste, salty taste. Sour taste is of acids, so answer is A. Sweet taste, yes, is of neutral substances. Bitter is of bases, and salty taste is of salts. So our answer is A, sour taste. Next question is, milk of magnesia contains dash hydroxide: sodium, potassium, magnesium, ammonium. Its answer is C. Specially, I told you milk of magnesia is used to control the acidic acid generate in our stomach. So it can act as an antacid. So yes, it's milk of magnesia, magnesium hydroxide. Next one is, manure is added when the soil is too. Manure, yes, manure is organic substance and it is slightly acidic in nature. So yes, it is added in the soil when the soil is too acidic or basic. It's basic. The answer is B. Okay. Now our next question are present on page number 71 itself on the bottom of the page. So yes, first MCQ is, baking soda solution turns pink China rose indicator green. It is dash solution. Yes, pink China rose solution to green. So yes, which kind of solution can change pink China rose to green color? It is acidic or basic? It is basic. So our answer is B, basic. Next one is, a substance is sour in taste, means acidic. Not soapy to touch, again means acidic. And has no effect on yellow turmeric solution. So yes, no effect on yellow turmeric solution. It can be neutral solution and it can be acidic solution. Not soapy to touch, it can be neutral solution and it can be acidic solution. But sour in taste, तो yes, sour in taste can only be acidic solution. एक क्वेश्चन में दोबारा बताती हूँ. yes, कोई भी सब्सटेंस अगर नॉट सोपी टू टच है तो वो एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. टर्मरिक येलो कलर पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा तो भी वो एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे थर्ड बताया हुआ है कि सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट सिर्फ एसिडिक हो सकता है. तो आर आंसर विल बी, अच्छा अभी एक लाइन हो रहा है, इट विल अफेक्ट डैश लिटमस पेपर. अगर वो एसिडिक है तो वो कौन से लिटमस पेपर को अफेक्ट करेगा? रेड को चेंज कर देगा. किस में चेंज करेगा? रेड को रेड में नहीं, तो रेड पे कोई इफेक्ट नहीं. तो इट विल इफेक्ट ब्लू लिटमस पेपर. आंसर इज बी. Okay. Now next question is, an acid reacts with a base to produce dash. Yes, acid and base neutralizes each other to produce a salt and water. D. So these are our MCQs which are present in chapter number 5, acids, bases and salts. Now move on to our next book work, that is circle the odd one out. Yes, first circle the odd one out is lemon juice, curd, tamarind or amla. Lemon juice is sour in taste, curd again is sour in taste, tamarind is again imli, sour in taste, but amla is bitter in taste. So its answer is amla, because amla is bitter in taste and rest all are sour in taste. Next is sulfuric acid, inorganic acid or mineral acid, which we are preparing in the lab. Nitric acid, again we are preparing in the lab. Lactic acid, we are finding in the curd, milk or milk products. So it is an organic acid. Next is hydrochloric acid, again we are preparing in the lab. So its answer is lactic acid.
Why? Because lactic acid is an organic acid and rest three are mineral acid or inorganic acid, we can say. Okay, so these are the answers of circle the odd one out. Now our next question is filling the blanks. First filling the blanks is टर्मरिक टर्न्स डैश्ड इन बेसिक सॉल्यूशन. यस, टर्मरिक का कलर क्या चेंज हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में? इट टर्न्स टू रेड इन कलर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल एसिड्स आर वेरी डैश इन नेचर. मिनरल एसिड्स, हम क्यों लेबोरेटरी में कोई भी एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं? वाई? बिकॉज दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर. बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये मेटल को कोरोज कर सकते हैं, कोरोड कर सकते हैं, तो दे आर कोरोसिव इन नेचर. नेक्स्ट इज फिनोल्फेथलीन इज अ डैश इंडिकेटर. फिनोल्फेथलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम खुद बनाते हैं. यहाँ पे हम सिंथेटिक भी लिख सकते हैं और ह्यूमन मेड भी लिख सकते हैं. यस, सिंथेटिक और ह्यूमन मेड इंडिकेटर फिनोल्फेथलीन इज. नेक्स्ट इज डैश सॉल्यूशन टर्न्स पिंक चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन. अभी अभी हमने एमसीक्यूज में किया था. पिंक चाइना रोज को ग्रीन में कौन चेंज कर देता है? इट्स बेसिक सॉल्यूशंस. So these are the answers of filling the blanks. Now move on to our next question, that is oral questions. So yes, oral question, first question is what is an acid? Name any two acids. So yes, what do you mean by acids? Acids are those substances which are sour in taste. तो उनको हम एसिड बोलते हैं. कोई भी दो एग्जाम्पल ले सकते हो. यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि आपने सिंथेटिक या इनऑर्गेनिक एसिड बताना है या ऑर्गेनिक बताना है. यू कैन राइट सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी दो एग्जाम्पल आप दे सकते हो. नेक्स्ट इज नेम टू नेचुरल इंडिकेटर्स एंड टू ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स. यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा नेचुरल इंडिकेटर्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर. सो दीज आर लिटमस और टर्मरिक और चाइना रोज वी कैन राइट. और सिंथेटिक और ह्यूमन मेड में हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी फिनोल्फेथलीन, अभी अभी हमने यहाँ पे किया फिनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस क्विज. विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंड स्टिंग. मैंने आपको बताया था समझाते हुए, एंड स्टिंग जो एंड जो चींटी होती है जो डंक करती है, जो डंक मारती है हमें, तो उसके स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है जिसके लिए हमें कोई भी बेकिंग सोडा एंड एसिड वगैरह यूज करना पड़ता है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. नेक्स्ट इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, मिल्क प्रोडक्ट्स. इन सब में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड. सो यस, दीज आर द आंसर्स. तो यस, एक बार मैं आपको ये पूरा ब्लैक बोर्ड दिखा रही हूँ. जस्ट सी दिस और राइट द आंसर्स ऑफ द बुक वर्क इफ यू हैव नॉट रिटन. सो यस, दीज आर द आंसर्स ऑफ ऑल द बुक वर्क जो डिफरेंट पेजेस पे प्रेजेंट है. सर्कल द ऑड वन आउट, ये मैं आपको वैसे भी पीडीएफ में दूंगी. फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ओरल क्वेश्चन एंड साइंस क्विज. ओके, सो यस बेटा, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस चैप्टर. एंड इसके बाद आई एम रिपीटिंग अगेन, वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर चैप्टर सो दैट योर प्रिपरेशन ऑफ PT1 एग्जाम विल बी मोर एंड मोर हैपन और आपके कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 1, 2, 3 विल बी मोर एंड मोर क्लियर. तो यस, हम लोग अभी क्या करेंगे? वी विल रिवाइज द चैप्टर्स इन द फॉर्म ऑफ द वर्कशीट. अभी आपके लिए होमवर्क क्या है? यू हैव टू रिवाइज चैप्टर 1 फॉर टुमारो. कल की क्लास से पहले आप अपना चैप्टर 1 रिवाइज करके रखेंगे. मैं एक वर्कशीट आपको दिखाऊंगी और उसको आप सोल्व करने का ट्राई करेंगे. एंड कल के ही लेक्चर में मैं उस वर्कशीट को सोल्व भी करवाऊंगी. लेकिन आप लोग एक बार मेरे लेक्चर को पॉज करके उस वर्कशीट को सोल्व करके फिर आप उसमें आंसर्स मैच कर सकते हैं. सो इन दिस वे योर होल चैप्टर विल बी रिवाइज्ड. Most of the questions will be covered in the worksheet. If still some part will remain, then you have to do by your own. क्योंकि MCQs, filling the blanks can come from any part of the chapter in PT1 exams. So yes, students, this is all about for today's video. Thank you.